कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे हम सीएट की। 1958 में शुरू हुई सीएट देश की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई टायर कंपनी है। कंपनी सभी तरह की गाड़ियों के टायर बनाती है और 100 से ज्यादा देशों को प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम उनके ग्रोथ प्लान, विस्तार की योजनाओं और बिजनेस आउटलुक पर बात करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ कुमार सुबैया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, पहले तो अभी कच्चे तेल में जिस तरीके से गिरावट आई है और हम पूरे साल इस बीच देख रहे थे कि कच्चा तेल अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, तो उस पर अपना आउटलुक शेयर कीजिए। पूरे साल भर सीएट को इसका कितना फायदा हुआ और आगे के लिए क्या आउटलुक है आपका? थैंक यू। बहुत खुश हैं हम आपको इनवाइट किया है डिस्कशन के लिए। सी ऑयल और रॉ मटेरियल प्राइसेस लास्ट 2-3 महीने में थोड़ा स्टेबल रेंज में है। सो पिछले 2 साल रॉ मटेरियल प्राइसेस आगे चल रहा था रेगुलरली अबाउट 10-15% काइंड ऑफ एन इंक्रीज। तेल का प्राइस अभी $60 का रेंज में है पर लास्ट 2 months or so. So this is a good news from stability of raw material prices point of view. Generally, raw material prices do affect our operating margins. Only disadvantage that tire industry and anyone who is dependent on import has been facing for last couple of months is the sharp depreciation of rupee. Rupee 85-86 था, अभी 90-91 rupees तक to a dollar has become. So therefore import prices will have some impact to the extent of sharp depreciation of Indian rupee. Otherwise demand is normal. Raw material prices are within the range. So we look forward to a normal quarter. तो आगे भी नॉर्मल क्वार्टर की ही उम्मीद कर रहे हैं। रुपी डिप्रिसिएशन से थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें स्टेबल ही नज़र आ रही हैं सीएट के लिए। बट सर, आप FY27 के लिए आपका डबल डिजिट ग्रोथ का प्लान है, ये आपने काफ़ी बार इसके बारे में गाइडेंस भी दी है। इसमें की ड्राइवर क्या होंगे, ग्रोथ को किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा और क्या आप ऑन ट्रैक हैं इस तरह की ग्रोथ को अचीव करने के लिए? ठीक, आपको पता है टायर इंडस्ट्री इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। सो हायर स्केल में हमको रेगुलरली ऑपरेट करना पड़ेगा। हम साल में 1,000 करोड़ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसके लिए डबल डिजिट ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट। पहले साल भी हमारा ग्रोथ 11.5 to 12% था। अभी फर्स्ट 6 months also is we are about 12% kind of a growth. We look forward to ending the current year also double-digit growth. Next year, in the previous year, FY24-25, replacement market was the main contributor for improvement in our volume growth, and the replacement market led the growth in the last year. Current year, both exports as well as OEM business is leading the growth, and replacement is also growing in mid-single digits or higher single digits for the last 3 months. So going into the next year, FY27, that is April 26 to March 27, all 3 sector we are together we expected to contribute to a double-digit growth. हम अभी next year का annual plan बना रहे हैं, लेकिन हमारा expectation all 3 sectors should grow in double digits. We hope the issues with US get sorted out so that though the dependence on exports to US is less than 5% for us, any improvement in terms of sorting out the tariff issue also could also help in terms of getting growth in that particular geography also. So we are expecting in all 3 sectors. That is a summary. ठीक, तो हर एक सेक्टर से यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। ये जो ग्रोथ है अगले 2 से 3 सालों में आप किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटी से? क्या कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी एक्सपोर्ट मार्केट को आपका टैप करने की योजना है आने वाले समय के लिए? जी, हमारा अभी एक्सपोर्ट्स में अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यूरोप इज 1/3, अबाउट 30-35%, and Middle East and also Southeast Asia is about another 45% or so. So about 10% is Latin America, and US is less than 5%. In the current segments in which we are operating, आपको पता है सितंबर से हम कैम्सो बिजनेस मिशलिन से
खरीदा था, वो particularly compact construction business. Compact construction tires and tracks का business का share US is about 60% and about 30% to Europe. So therefore हमारा growth US में compact construction business particularly for Camso has high dependence. So geographical focus point of view for Camso, it will be more of US and Europe, to some extent Latin America, and rest of the business there will be a large dependence on Europe. We have developed lots of products for the US as part of entering into US for passenger car and truck and bus radial tires, which if currently we are facing some headwinds because of tariff. If that gets sorted out, we hope to grow on a small base at a higher percentage in the US market too. बिल्कुल। तो ग्लोबल अगर देखें तो सीएट अपने पोजीशन को यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश कर रही है और अलग अलग सेगमेंट के जरिए उन्हें ये ग्रोथ भी नज़र आ रही है। ऑलराइट सर, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी व्यू आपसे समझना था इस पर। तो अगर ऑटो सेक्टर के डिमांड देखें तो वो आपको कैसी नज़र आ रही है? हालांकि फेस्टिव सीजन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था, बट आने के लिए डिमांड सिनेरियो आपको कैसा नज़र आ रहा है? Since September month, आपको पता है GST on tires prior to rationalization was 28%. अभी it has become 18% from 22nd of September. For farm tires, it has come down from 18% to 5%. So it is really acting as a fillip. We are seeing a lot of momentum in the replacement market for tires and tubes, which we thought was a kind of a 1 month kind of an activity. We are seeing momentum there, particularly after GST drop has happened for tires and tubes. Abhi OEM side se bhi demand growth has been higher. October month and November months were very good months for OEMs. So therefore, from our standpoint, OEMs and in the replacement market, there is a momentum, and therefore that is giving us the confidence that we would be able to grow not only in the current year in double digits, but also in the coming year in excess of 10%. In exports, we have huge opportunities, and we have penetrated into Europe market and Middle East substantially in the last 2 years of effort. Plus, if US issue gets sorted out, we see a momentum there. So therefore, confidence level with respect to a double-digit growth in all these three segments, and domestic fueled by GST, drop in GST and higher level of economic activity, Europe and the rest of the world on account of our own efforts is looking positive at this point in time. सर, ये जो कैम्सो के बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उसी के इंटीग्रेशन से जुड़े मुझे तो कुछ और भी सवाल थे। जो रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या उतना कंट्रीब्यूशन अब मिलना शुरू हो चुका है? और क्योंकि काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट पर ये कंपनी फोकस भी करती है, तो मार्जिन को लेकर आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक है आपका? अभी इंटीग्रेशन अभी चल रहा है। आपको पता है सितंबर से हमने ये बिजनेस इंटीग्रेट किया है, and maybe at the end of the quarter we would be in a better position to share based on one full quarter experience. So far in the last 2 to 3 months, the things have been in line with our expectations on overall, and considering a large exposure to the US business for Camso, okay, and where the tariff has changed even for Sri Lanka, and there could be some short-term minor implications on the realization till such time the transmission of impact of tariff to the customers happens. So हमको और एक by end of the quarter, that is in the month of January, हम आपसे इंटरेक्शन करने के टाइम आपको थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं, लेकिन अब तक is in line with expectations. चलिए, बिल्कुल। अभी तो एक्सपेक्टेशन ऑन ट्रैक ही है, जहां से जो भी कंट्रीब्यूशन मिल पा रहा है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में है कंपनी, और 1-2 क्वार्टर अभी देखना होगा ठीक तरीके से चीज़ों को आकलन करने में, क्योंकि यूएस एक्सपोजर है तो वहां से भी कुछ क्लैरिटी आनी बाकी है आने वाले समय में टैरिफ को लेकर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, सेक्टर पर और कंपनी के आउटलुक पर भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।